आप अभी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम के लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मन बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्र नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। आप भी जो है ना, जो मैं जय गुरुदेव। विनोद जी, गुरु भाई से अनुरोध है, कृपया गुरुदेव की दिव्य लेखनी का पाठ करें। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। आज की दिव्य लेखनी का शीर्षक है, हमें सत्य की खोज करनी होगी। कुछ गुरुदेव लिखते हैं, संसार एक बहुत ही विचित्र पहेली है। परम सत्ता ने अपनी त्रिगुणमयी माया के द्वारा ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि कर्ता भोक्ता में कोई भी अंतर न होते हुए अंतर नजर आ रहा है। इस युग में मात्र जीव भाव ही शेष बचा है, आत्म भाव लुप्त प्राय हो चुका है। यही कारण है कि आज विश्व में जितनी अशांति फैली हुई है, ऐसी पहले कभी नहीं रही। इस समय विश्व से सतोगुण लुप्त प्राय हो चुका है। यही कारण है कि रजोगुण पर पूर्ण रूप से तमोगुण का प्रभुत्व है। इसीलिए विश्व के कर्णधार भय से शांति स्थापित करने का असफल प्रयास कर रहे हैं। पैगंबरवादी अपने आणविक हथियारों का भय दिखाकर ज्यों-ज्यों शांति स्थापित करने का प्रयास तेज कर रहे हैं, अशांति उससे भी तेज गति से फैल रही है। आज विश्व में निरंतर नरसंहार हो रहा है, उतना पहले कभी नहीं हुआ। आज संपूर्ण विश्व को 7-8 बार नष्ट करें, उतने हथियार बन चुके हैं। उनसे कोई यह पूछे, पृथ्वी को जब एक बार नष्ट कर दोगे, फिर जब विश्व में प्राणधारी कोई बचेगा ही नहीं, तो बाकी का क्या होगा? प्रभु ने जो शक्ति सृजन के लिए दी थी, उसका उपयोग विध्वंस में करने वाले क्या सेनाओं के यहोवा के कोप से बच सकेंगे? सेनाओं का यहोवा क्या करेगा, उन्हें इस भविष्यवाणी का रोज चिंतन करना चाहिए। सेनाओं का यहोवा अचानक बादल गरजाता, भूमि को कंपाता और महाध्वनि करता, बवंडर और आंधी चलाता और नाश करने वाली अग्नि भड़काता हुआ उसके पास आएगा। यशायाह 29 विसर्ग 6। क्योंकि विश्व भर में तामसिक वृत्तियों का एक छत्र साम्राज्य है, अतः वह शक्ति मानव को शांति से बैठकर सोचने का मौका ही नहीं देती है। शांति और अशांति मनुष्य के अंदर है,
आणविक अस्त्र शस्त्र में नहीं, उनमें शांति ढूंढना मात्र मात्र मृग मरीचिका है। भय मिश्रित शांति मानव हृदय में जो वेदना पैदा करती है, उससे अशांति चौगुनी बढ़ती है। विश्व शांति मात्र धर्म से ही संभव है। संसार भर के सभी धार्मिक ग्रंथ और संतों की वाणी जो सच्चाई कह रही है, जब तक हम सभी उनकी प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार करने का प्रयत्न पूरी लगन से नहीं करेंगे, शांति मृग मरीचिका ही बनी रहेगी। मानव जब तक यह समझकर कि मानव मात्र परमेश्वर की संतानें हैं आचरण नहीं करेगा, शांति असंभव है। मात्र शांति शांति चिल्लाने से कोई लाभ नहीं होगा। जब तक संसार के लाखों करोड़ों लोग अंतर्मुखी होकर आत्म साक्षात्कार नहीं करेंगे, कार्य सिद्धि असंभव है। वेदांत दर्शन स्पष्ट शब्दों में कहता है, सर्वम खलविदम ब्रह्म। भारतीय दर्शन के सभी ग्रंथ एक स्वर में कहते हैं कि उस परम तत्व की प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार केवल मनुष्य योनि में ही अपने अंदर ही की जा सकती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 13वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा है, उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाशयुक्तो देह स्मिन् पुरुषः परः। वास्तव में यह पुरुष इस देह में स्थित हुआ भी पर अर्थात त्रिगुणातीत ही है। केवल साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता एवं सबको धारण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता तथा ब्रह्मादिकों का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा, ऐसा कहा गया है। उपर्युक्त श्लोक से स्पष्ट होता है कि मनुष्य योनि का उच्चतम विकास उस परम सत्ता के तद्रूप होना है। जब तक विश्व में ऐसे विकसित लाखों करोड़ों लोग प्रकट नहीं होंगे, शांति असंभव है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में कहा है, ईश्वर है सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से भरमाता हुआ सब भूत प्राणियों के हृदय में स्थित है। मात्र अंतर्मुखी होने की देर है, सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है, परंतु यह कार्य गुरु के बिना असंभव है। मात्र गोविंद से मिलाने वाले को ही सद्गुरु की संज्ञा दी जा सकती है। ठीक उपर्युक्त भाषा में ही बाइबिल बोलती है। 2 कुरिन्थियों 6 विसर्ग 16 में भगवान ने ही अपने उपर्युक्त श्लोक दोहराते हुए कहा है, और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या बंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बोलूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग। उपर्युक्त श्लोक से स्पष्ट है कि मनुष्य योनि में ईश्वर के दर्शन संभव हैं, जिसे मोक्ष कहते हैं। बाइबिल इसे अनंत की संज्ञा देती है। प्रकाशित वाक्य 2 विसर्ग 11 में कहा है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचेगी। शब्द से सृष्टि की उत्पत्ति को सभी धर्म स्वीकार करते हैं। शब्द से उत्पन्न हुआ पुरुष पुनः शब्द के रूप में परिवर्तित हो सकता है, यह बात मात्र वेदांत दर्शन ही कहता है। शब्द ब्रह्म से परब्रह्म की प्राप्ति का सिद्धांत मात्र हमारे दर्शन की ही देन है। विश्व को इस दिव्य ज्ञान का दान भारत अनादिकाल से करता आया है और करता रहेगा। भगवान श्री कृष्ण ने सृष्टि की उत्पत्ति के संबंध में गीता के 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा है,
ओम तत्सदिति निर्देशो अर्थात ओम तत्सत ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। उसी से सृष्टि के आदिकाल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादिक रचे गए हैं। इस संबंध में वेद स्पष्ट कहता है, आओ उस ज्योति में पहुंचे जो स्वर लोक की है, उस ज्योति में जिसे कोई खंड खंड नहीं कर सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं वह प्रकाशप्रद शब्द अजर अमर है, अनादि अनंत है। पातंजलि योग दर्शन में भी ऋषि ने कहा है, हरि नाम के जप के बिना कैवल्य पद प्राप्त नहीं किया जा सकता, योग सिद्धि नहीं हो सकती। समाधि पाद के 24 से 29 तक के श्लोकों में ऋषि ने ईश्वर की व्याख्या करते हुए उसके नाम जप से विघ्नों का अभाव और आत्म साक्षात्कार की बात कही है। ऋषि कहता है, क्लेश, कर्म, विपाक और आशय, इन चारों से जो संबंधित नहीं है तथा जो समस्त पुरुषों से उत्तम है, वह ईश्वर है। उस ईश्वर में सर्वज्ञता का बीज कारण अर्थात ज्ञान निरतिशय है। वह ईश्वर सबके पूर्वजों के भी गुरु हैं। सर्ग के आदि में उत्पन्न होने के कारण सबका गुरु ब्रह्मा को माना जाता है, परंतु काल से अवच्छेद है। गीता 8 विसर्ग 17। क्योंकि उसका काल से अवच्छेद नहीं है, उस ईश्वर का वाचक नाम प्रणव ओम है। उस नाम का जप, उसके अर्थ स्वरूप परमेश्वर का चिंतन करना चाहिए। उक्त साधन से ईश्वर के नाम जप से विघ्नों का अभाव और अंतरात्मा के स्वरूप का ज्ञान भी हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता के 10वें अध्याय के 25वें श्लोक में नाम जप को अपना स्वरूप बताते हुए उसे सर्वोत्तम यज्ञ की संज्ञा देते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा है, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। महाभारत में भी हरि नाम के जप को सर्वश्रेष्ठ धर्म की संज्ञा देते हुए कहा, जपस्तु सर्वाधर्मेभ्यः परमो धर्म उच्यते अहिंसया च भूतानाम जप यज्ञ प्रवर्तते। समस्त धर्मों में जप सर्वश्रेष्ठ धर्म है, क्योंकि जप यज्ञ बिना किसी हिंसा के पूरा होता है। यहूदियों के सृष्टि उत्पत्ति प्रकरण में भी कहा है, समुद्र के ऊपरी तल पर अंधकार था और ईश्वर की आत्मा जलों पर विचरण कर रही थी। शब्द के द्वारा उसने समुद्र को अंतरिक्ष से विभक्त किया, जिसके परिणाम स्वरूप अब यहाँ 2 समुद्र हैं, एक पार्थिव जो अंतरिक्ष के नीचे है, दूसरा धूलोकीय जो अंतरिक्ष के ऊपर है। ईसाइयों के पवित्र ग्रंथ बाइबल में भी जैसे गीता में ओम को ईश्वर का प्रतीक माना है, शब्द को ही परमात्मा की संज्ञा दी गई है। सेंट जॉन 1 विसर्ग 1 से 4 में कहा है, आदि में वचन अर्थात शब्द था और वचन शब्द परमेश्वर के साथ था और वचन यानी शब्द परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। उस शब्द में जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। मनुस्मृति में भी जप यज्ञ की महिमा का बखान करते हुए उसे कर्म कांड वाले यज्ञों की अपेक्षा बहुत श्रेष्ठ और आत्मा का कल्याण करने वाला कहा है। दर्श पौर्णमास रूप कर्म यज्ञों की अपेक्षा जप यज्ञ 10 गुना श्रेष्ठ है। दर्श पौर्णमास रूप कर्म यज्ञों की अपेक्षा जप यज्ञ 10 गुना श्रेष्ठ है। उपांशु जप 100 गुना और मानस जप मानसिक जप सहस्त्र गुना श्रेष्ठ होता है। कर्म यज्ञ के 4 पाक यज्ञ हैं, वे जप यज्ञ के 16वें अंश के बराबर भी नहीं। ईश्वर के नाम जप से जो दिव्य आनंद
साधक को निरंतर आता है, उसे संतों ने अपनी भाषा में नाम खुमारी की संज्ञा दी है। इस संबंध में संत सदगुरु श्री नानक देव जी महाराज ने कहा है, भांग धतूरा नानका उतर जाए प्रभात, भांग धतूरा नानका उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। संत श्री कबीरदास जी महाराज ने कहा है, नाम अमल उतरे ना भाई, और अमल छिन छिन चढ़ी उतरे, नाम अमल दिन बढ़े सवायो। अतः जब तक यह नाम खुमारी संपूर्ण विश्व को आनंदित नहीं कर देती, शांति केवल कल्पना ही रहेगी। गुरु शिष्य परंपरा में शक्तिपात दीक्षा का अत्यधिक महत्व है। शक्तिपात दीक्षा हमारे दर्शन का उच्चतम दिव्य विज्ञान है। यह गुरुओं द्वारा दी जाने वाली गुप्त दीक्षा है, जो आदिकाल से गुरु शिष्य परंपरा में चली आ रही है। गुरु शक्तिपात द्वारा साधक की कुंडलिनी को जागृत कर देते हैं। हमारे शास्त्रों में इसे जगत जननी कहा है। जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। यह दिव्य ज्ञान मात्र हमारे ऋषियों की ही देन है। आज यहीं तक। इस दिव्य लेखनी का शेष भाग हम कल पढ़ेंगे। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय दादा 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 गुरुदेव। गुरुदेव की कृपा से चलने वाले सामूहिक ध्यान, गुरु चर्चा और एक्सपीरियंस शेयरिंग के इस सेशन पर सभी गुरु भाइयों गुरु बहनों का स्वागत है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री। माइक डिसेबल करने पहले जय गुरुदेव। चलिए, कोई भी गुरु भाई और गुरु बहन अपनी कुछ अनुभूति रखना चाहे, प्रश्न जिज्ञासा अगर कुछ रखना चाहे, या अपने बारे में बताना चाहे कि कैसे गुरुदेव सियाग सिद्ध योग से कैसे जुड़े, इस पर अगर अपनी बात रखना चाहे तो स्वागत है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी गुरु भाई और गुरु बहन अपना हैंड रेस करें और अपनी बातें रखें। जय गुरुदेव। आज की लेखनी बड़ी दिव्य थी। यज्ञों में सबसे उत्तम यज्ञ है जप यज्ञ, और वही यज्ञ हम लोग करते हैं हर दिन गुरुदेव के इस योग से जुड़कर। हर दिन, हर पल, हर क्षण यज्ञ का हम लोग अनुष्ठान करते हैं। जप यज्ञ, मानसिक जप हम लोग करते हैं गुरुदेव के द्वारा दी गई संजीवनी मंत्र का। उसी संजीवनी मंत्र से ही हम अपने आत्म स्वरूप तक पहुंच सकते हैं। अधिक से अधिक हम लोगों को संजीवनी मंत्र का जाप करना है। अधिक से अधिक समय संकल्प करके संजीवनी मंत्र जपने में लगाना है। जय गुरुदेव। कोई भी गुरु भाई एवं गुरु बहन अपनी बात रखना चाहे, काइंडली प्रेस करें, बातें रखें। या तन विष की बिलरी, गुरु अमृत की खान, इस दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता। गुरु के बाद चाल जय गुरुदेव। Charles, if you want to say something, you can unmute and you can also start your video also. Jai Gurudev. Yeah, Vicky, can you hear me? Yes, today you are audible. Okay. Yes. Oh, good. Oh, Jai Gurudev.
Exactly. It's very nice to hear you. Yeah. So, Actually, this yes, you first. Actually, basically, the audio, the attendee here are from Hindi medium, Hindi audience. But still, I request you to address, say something how you came to know about our Gurudev and what actually is happening within you, how you came to know about our Gurudev, Okay. your Yeah. journey to in Yeah. detail. Uh-huh. Yes, Okay. You know, I knew about Gurudev through a member, through a Gurudevite. And we were together in the Moanji Foundation doing Kriya Yoga. yes, Yes. And so I was, they used to depend on me for a lot of explanations. I used to write in Moanji. Most of the writing about Moanji is the poems in his blog written by me. Many of the things there, yes. So uh, this friend sent me the link to Gurudev website. I did not very look nice. at it. I just said, but I said this friend is very funny. We are in Moanji Foundation, and he's sending me some other thing. I did not look at it for over 2 weeks, Okay, and so one day we're chatting on WeChat on WhatsApp again. And he asked me. He said, because he calls me mentor. He said, mentor, my mentor, have you checked that website? I said, but what is there now? I said, he said, just check it, just go. I said, okay, let me check. I clicked on it and I read it. Immediately something told me that, hey, this is wonderful. And that very night, I did the initiation and the meditation. I yes. remember where it was on the 26th of October last year. Last year. Okay, Yes, very nice. We remember the date also when Gurudev comes in our life. That's the most yes, important date of yes, our life. that is true. So I decided to do it. I thought that I will be doing Gurudev and doing Kriya Yoga and doing all the chants and all the like. And the good thing is that even though I was very active in Moanji Foundation, uh, doing my Kriya Yoga, I did Kriya Yoga every day for 2 years without missing one day, without missing one day, because you must do it uninterrupted. So I did it consecutive. Sometimes I would do it 3-4 times a day for 2 years, Yes, every day, very intense. And then chanting the Gayatri mantra, Om Namah Shivaya, and many other mantras. In fact, I love chanting mantras. yes, Yeah. So when I started Gurudev, I would do my Kriya Yoga, and then I would do Gurudev too. Then I started reading, and I realized that no, with Gurudev, you don't have to chant any other mantra. I said, but what will I do? I said, I love these mantras. I had about 10 mantras that I would chant every day. In fact, just like Om Namah Shivaya, Gayatri Mantra, etc. Many yes, mantras. I used to do my sadhana every day for about 5 hours every day. Wonderful. Yes, in this my ashram here.
Yes. Yes, Your home is the ashram, your ashram, yes, and you are yes. practicing your sadhana by chanting various mantras. Various mantras. Mantra of Tibetan origin, Indian origin, see, many, but mostly Hindu mantras. Yes, Shiva mantras. I used to even chant some mantras from Buddhism. And then the divine mantra that we are given now, I saw one mantra that I love very much. Uh, uh, it's a Krishna mantra. I Yes. loved it so much. I was chanting it every day. And then when I saw the divine mantra, I said, hey, it's just this, almost the same, but simpler than that one. And then this one has been given by an empowered master. But the other one, I just found it on YouTube, and I loved it. And I think it is that mantra that made me come closer to Gurudev. Yes, because calling the divine name of God every day, and the friend with whom I shared it in Cameroon, he is also a Guru by now. We stopped Yes. we stopped everything. So when I realized that you cannot mix a Gurudev with any other thing, I remember on the 13th of November, I Yes. stopped Moanji. I was not doing it again. I used to chant Moanji's Gayatri mantra. It has about 3 Gayatri mantras. That is invoking the Guru. Yes. I used to chant about 3 Gayatri mantras every day for Moanji. But the effect, and then I had his picture here. Look at it every day, but no effect like Gurudev. But with Gurudev, if I'm even passing, I'm just passing. I look at his photo, even for 30 seconds. I will have some yogic movement. My body will make immediately. Yes, but then so I just said no. I think this, and then I had I had started having uh, Kundalini problems, like from chanting, and then the Gayatri mantra in particular. I would chant. I loved it so much, loved it. So when I realized that uh, Gurudev had attended Gayatri cities, I thought it was the Gayatri mantra. I said, wow, means it's good. So everything just followed. I said, I am on the right track. And then when I read that Gurudev said after some time, his master told him to stop chanting any other mantra and only the divine mantra. Ah, so I had to stop all the other mantras too and concentrate only on the divine mantra. And I did some research, like there is something I'm going to write. I started writing it already about the Gurudev's supreme siddhis, siddhic powers. I think I will finish writing it tomorrow. Yes, Okay. We would love to read that one. yes, Yes. yes. And in fact, when I was bathing, I was taking a bath this morning. Something just told me that I am chanting the most powerful mantra in all the spiritual path. It occurred to me that there is no other mantra that is higher than the divine Gurudev's divine mantra. The thought came to me while I was taking a bath that this is the highest mantra. There's no other mantra again. Yes, Yes, the mantra is powerful. You're rightly saying that. But yes, actually, the important part is our Gurudev. yes, Gurudev, we are listening the mantra from Gurudev's voice, and Kundalini power.
gets attracted by Gurudev's photo and Yes. the mantra given by him. So Gurudev says the more you chant the mantra, the very rapidly your Kundalini Shakti gets activated and reaches to Sahasrar, the highest crown. Yes. So Gurudev is most important. Most important. Yes. Imagine that I've been how many years I told you about my spiritual journey in a Kanka for about 23 years. And then when I finished there, I finished all the discourses. They said you finished the last discourse, they call it the master discourses. I reached the master discourses, the 4 master discourses. When I finished them, I said, they told me that now you have come to the end of your spiritual. I said, but I'm still not satisfied. So I changed. I registered with the Mudra Ashram Institute of Spiritual Studies in California. Yes. And then it was too much book reading, too much book. I was not, as I'm a teacher here and I have no time to read too much. So I said I left Ekanka, too much reading, discourses, sermons, and I read Gurudev said all those discourses, sermons, speeches cannot make you spiritual. Yes. Waste This is the of fact. yes, It's a waste of time. yes. Yes. And then I It's started Acharya Shuyogi's yes. chakra awakening course. Yes, Yes. but that one too is I still have the course here. I did not, it was not satisfactory. But when I Yes. touched the divine mantra, oh my God. That night, when I did the initiation, I noticed that something happened. I said, but what is it that happened? My God. I said, this is wonderful. And then I did it again the next day. I read more about the Kundalini, and then I understood now that God had guided me to the place where I would be taken care of, because my Kundalini was already giving me trouble. And in the Mohanji Foundation, they told me that I should stop eating. I should be a vegetarian. Oh God. Yes, I became Now a they are vegetarian. not able to control the power reason within Yes. you through. Uh-huh. Yes. I stopped eating, but it continued, especially when I'm doing the Kriya practice. The last stage, because the Kriya, this thing is in 4 stages. When I was during the last stage of the Kriya practice, I would see a terrible force shaking my body like that, shaking my body. I did not know. I wrote to the Mohanji Acharyas. Nobody could say anything, and even Guru Mohanji, he does not touch the Kundalini. Says only prepare the way. That is very dangerous, very dangerous. He is very, very dangerous, very Yes, powerful Kundalini power is there. yes. Nobody wants to touch that power. And Gurudev is the master of that power. My This is God, the I important say thing. he's the master of that power. And then Yes. you see all the things that the other spiritual groups they do, whether they go on retreats, they chant mantras, they do all kind of activity. It is the end result is to awaken the Kundalini. Yes. That's the end, but they don't know. Yes. But they are doing how much labor, how much time they are giving for this Kundalini awakening. But in our case, it's just within a second it gets awakened. Yeah, when I start the meditation, it's only 3 minutes. 3 minutes. And Yes. it
Just 3 minutes, it starts already. Okay. Not That power, up that Kundalini power, we call it serpentine power. It started moving its head and now Yes. nodding his head. That is it. And then during Yes. the meditation, my body makes as a snake moving. Yes. My body makes as if a snake is moving. And I Yes. said, this is the power, right? This is it. My body Yes. makes like that. Huh? At times go like that. I know that this is how a snake moves like that. I understand. Yes. I'm not Yes. afraid. Afraid of what? Yes. I've been looking for this kind of spiritual development for throughout my life. Then now I come and see it and I'll be afraid. Afraid of what? So I'm very Yes. happy to embrace it. That is why I chant the divine mantra almost in fact, if I'm going to the market, I'm chanting it. I'm bathing, I'm chanting it. I'm going for my Gurudev walk, I'm chanting it. I'm cooking, I'm chanting it. And then in the morning, I do my sadhana like I was doing in Mohanji Foundation. I must consciously chant the divine mantra for 2 hours Yes. every day. Yes, I must sit like I'm sitting now, and I'll chant it for about 2 hours, non-stop. And I do meditation. That's how I do it. I say even if I forget, but my sadhana time, I'll put 2 hours only to chant the divine mantra. That's what I do. Here, our own labor, our own effort, it does not and at all required. We are simply chanting the mantra, and our progress is enough, and we are satisfied that we are on the right track. Uh, Everything That's is done by Gurudev and Kundalini power by its own, and through the course of your sadhana, you will realize that we are just putting some effort in mantra jap, etc., etc. That is also an illusion. Actually, Kundalini power is doing that mantra jap, and Kundalini power is doing all sorts of activities within you to reach up to that Gurudev who is residing there. You will realize later on the sadhana. Huh? that's We are just not the doer. We are just the observer, and that power, which is Kundalini power, it goes on its own way, and through its own chanting, you will realize that. that's true. That's true. But Yes. yeah, that's true. But I just want to satisfy myself. Just want to satisfy myself that I'm doing my own part. Yes. 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 Yeah, we should do that. Yes. Mm. Because we are co-workers with Gurudev. We are co-workers. We must do the little that he tells us to do and leave the Yes. rest to him. Yes. Yes. And then any other experience your inner journey of your inner meditation process? You said about the movements that is happening with in your body, and any other you are experiencing, just we call it automatic chanting of mantra, that is ajapa state, and there is some divine sounds just you will hear in your brain. That's like that's a nad stage is also that you will hear different divine sounds also. I It happens to most of the seekers in this practice. Yes. Yeah. Yes. For that one, Hmm. for sounds, sometimes I hear a sound in my right Left ear. ear. Right ear. Okay. Sometimes in the left ear, sometimes in the right ear. Yes. Yes. And I know that is. I understand. You know, Gurudev Siddha yoga as it comprises all the yogas. And then I know that at this stage, when you are listening to the sound and all the like, that is actually the Surat Shabda Yoga. That you are Yes. experiencing. Yes. Surat Yes. Shabda Yoga.
And I know that because that is what we studied in Ekanka, but we had an American master. What does he know about it? Nothing. Only writing books and all the like and taking money. Yes. So yes, when you are listening to the sound current, after in Gurudev's Siddha Yoga, you are experiencing the various kinds of yoga that Gurudev has told you that this Siddha Yoga has all the yogas. It has Hatha Yoga, it has Suraj Shabda Yoga, it has, everything, all the other yogas. So I understand. Like the other day Sunday when you were talking, I was very happy. I understood everything you were saying because I know that you were identifying the various sounds. You hear the crickets, sound of a flute. Sometimes you even hear waterfalls pounding. Yes. Bees, buzz, the buzz of bees, and all the like. Those are the sounds. Yes. Yeah. This is in Sanskrit it is called nad, N-double-A-D, nad. Yes, nad. Yes. Nad. Those Yes. are the nadi sounds. Yes. Nad means divine sound. That is what we were calling in Ekanka the sound current. You are listening to the sound current. Sound current. Yes. Yes. Sound current. And so yesterday I had an experience. That one when I went to sleep. I just lay down in bed and the yoga movement started in bed. So my partner, I don't know, she was surprised and afraid. What is happening to me? Maybe she thought I was going to die. Because my body started contracting. I was shaking. She said, what is happening? What is wrong? Put on the light. Can I help you? Just say, no. Just It's all okay. We are enjoying with these movements. When actually these yogic movements goes on in our body, the person staring us. They feel that it's something weird is going on, but actually we are understanding. It's a very nice experience. We understand, and we are not afraid, but they are afraid. They are afraid. So it's a very interesting. I love it because the whole of spirituality is just in one small box. Gurudev. Yes. Everything in one place. Yes. Everything in one place. So it's so interesting. Yes. Gurudev always says a practical thing. Practical yoga we are doing. And earlier, before the advent of Gurudev in our life, we searched thousands of books, thousands of practices, but we do not get anything, and not a single inch movement happens in our body. And just because of one mantra and listening in Gurudev's voice, everything happens, and we are satisfied that we are on the right path, and we will lead to the pinnacle, the highest samadhi stage of salvation, whatever the stage is there, we will reach definitely by chanting this mantra and by surrendering and loving to our Gurudev. This is our conviction, and it is 100% true also. That's true. Yes. That's very, very okay. Okay, Guru Bhai, keep joining this session, and we are joining running the English session on Sunday. Every Sunday you join the session also, and let us. What would I will be there. Yes. Always there. Yes. Okay, Jai Gurudev. Many of our Hindi Guru Bhais also joining this session. If they want to say something, यदि उन लोग कुछ कहना चाहें तो kindly raise their hand. अपना hand करके आप Hindi. Those who are joining in Hindi session, they have there are many Guru Bhais, and they have very nice experiences. Yes, they are very much divine. Okay.
but actually the Hindi is your problem. You won't be understand Hindi. No, I will not Otherwise, you will enjoy this session. We are running this session, and many of Guru Bhais are joining there. Guru Bhai and Guru Bahan. Yes. So you would be enjoying listening to their experience. These things happens, etc., etc. Yes. Yes, yes. जय गुरुदेव गुरु बहन जी, जय गुरुदेव। जय आप गुरुदेव। जय विक्की गुरु से थोड़ा सा उनकी ट्रांसलेट करिए हिंदी में, थोड़ा सा उन्होंने बताया वो हम समझ भी नहीं पा रहे हैं। Yes, और yes. एक Now, क्वेश्चन से ये कि स्पिरिचुअलिटी पे क्यों आए ये? yes. So, one of our Guru Band wants me to translate your experience in Hindi. So, I'm just translating that in Hindi. हाँ, तो मैंने गुरु बहन वो बता रहे हैं कि मैंने गुरुदेव से मिलने के पहले वो बहुत सारी साधना करते थे, गायत्री मंत्र का साधना किए, और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वो जो थे क्रिया योग से जुड़े हुए थे। तो उनका यूएस कैलिफोर्निया में कोई मोहन जी गुरु थे, उनसे मैंने साधना लेकर वो बहुत प्रैक्टिस किए क्रिया योग का। मैंने दिन में 4 बार क्रिया योग करते थे। मैंने गायत्री मंत्र, घंटों गायत्री मंत्र का जाप करते थे, ओम नमः शिवाय का जाप करते थे। हाँ, ऐसे मैंने कई सालों से वो साधना कर रहे हैं, और बहुत सारा बुक्स वगैरह भी पढ़े हैं। इवन 5-5 घंटा बैठ के मैंने गायत्री मंत्र जप किए हैं, और जप करने के बाद कुंडली शक्ति कुछ जागृत भी हुई, लेकिन वो कुंडली शक्ति कंट्रोल वे में नहीं थी, नॉट इन अ कंट्रोल वे। मैंने तो फिर उसके बाद बहुत सारा कोर्स भी उन्होंने किया है, पैसा दे दे के कोर्स किया गया। लेकिन कोर्स करने के बाद कोर्स मतलब 4 लेवल ऑफ कोर्स कंप्लीट करने के बाद भी मैंने कुछ नहीं हुआ। कुछ हुआ क्या, मैंने जो कुंडली शक्ति अगर जागृत भी हुई है तो मैंने सही तरीके से नहीं काम कर रही है, उससे परेशान हो गए थे। फिर लास्ट में गुरु भाई का मैंने अफ्रीका में कोई गुरु भाई है, उन्होंने गुरुदेव का मैंने कंफर्टर का जो लिंक है गुरु भाई को दिया गया। तो गुरु भाई वो लिंक से गुरुदेव के बारे में जैसे पता किए, पता करने के बाद उनको वो मंत्र, गुरुदेव का मंत्र लेकर वो जब करने लगे तो 3 मिनट के अंदर, विद इन 3 मिनट्स उनका कुंडली पावर जग गया, और उसका जो मूवमेंट वगैरह, हेड मूवमेंट और नेक मूवमेंट, हम लोग का योगिक क्रिया उनका शुरू हुआ। तो फिर उनको समझ में आ गया, और पूरा अच्छी तरह से उन गुरुदेव से पूरा समर्पित हो गए हैं। गुरुदेव बहुत सारे शिष्य वो बताते हैं, बहुत सारे अफ्रीका में उनका गुरु भाई लोग हैं जो हमारा इस सिद्ध योग को करते हैं, और वही अफ्रीका से गुरु भाई उनका जो गुरु भाई हैं जो आगे क्रिया योग करते थे, लेकिन बाद में सिद्ध योग में आए, और उन्हीं ने उनको बताया। अफ्रीका में बहुत सारे गुरु भाई हैं जो सियाग सिद्ध योग को फॉलो करते हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, गुरु भाई बता रहे थे। तो अफ्रीका में भी गुरु बहुत सारे सियाग सिद्ध योग के ये हैं, शिष्य हैं। यही उनका एक्सपीरियंस है। अभी वो सब चीज छोड़ चुके हैं, और केवल एक मंत्र जपते हैं, गुरुदेव के शरण में है, पूरा डिवोटेड है, बहुत दिव्य। और वो जो बोलते हैं उनका जो घर ही है, उनका जो रूम है वो आश्रम है। यही चीज है, बड़ा दिव्य अनुभव है। और गुरु भाई चाइना से हैं, चाइना से जुड़ते हैं, और बहुत पुराने अध्यात्म के जिज्ञासु हैं। यही है संक्षेप में। जय गुरुदेव। I have given बोलिए। Yeah, Vicky. हाँ जी, इनसे पूछिए स्पिरिचुअलिटी में इनका इंटरेस्ट कैसे हुआ शुरू में? Yes. One of our Guru Bahan wants to know how did you get this interest in spirituality? In fact, I have been, I have been interested in spirituality right from young, right from 20, 23, 24 years. But in Africa, so we did not know how to contact, do the right contact. So yes. I joined Ekanka about when I was even just 25 years old. See, I've loved spirituality, spiritual things for a long time, and it doesn't start in this lifetime. Because yes, गुरु भाई बोल रहे हैं कि जब वो 25 साल की उम्र में थे तब से उनको इंटरेस्ट था, और कुछ आकांक्षा बोल के कुछ है उन योगिक पद्धति,
उनसे वो जुड़ के पढ़ाया शुरू किए थे। यस Yes. So I was just moving like that, and some like floating. Like I used to see my past life. Like I've been. गुरु भाई पास्ट लाइफ भी देखे हैं बोल रहे हैं। Yes. कैरी ऑन। Like I've been Indian. I have been Indian. I have been Chinese. I have been German. I have been French. I have been American. I've been Red Indian. All I saw it. Yes, I saw Oh, Yes. these were you were in past life in these countries. In these countries. Yes, like Oh God, nice. I have been Indian. Maybe that's why I like spirituality, because I have Yes. an Indian past too. Yes. Yes. I have That's an Indian past. So as I was drifting, let me tell you, when I was still in a Kanka, I had a master, but I cannot forget that date. I have my dream journal. I used to keep a dream journal. My dream journal is there. In fact, I started keeping a dream journal from 1992. yes. I write down my dreams. Okay, the dream I had, that when I look at my dream book, I understand. You know, the masters, we cannot say that we have found Gurudev. Gurudev found us before we knew him. He had contacted us already. Gurudev has contacted those who are ready to follow him. So we are not doing anything. Gurudev himself has done the work of contacting all his disciples before they come to him. Okay, when I look at my dream journal, I had this dream on the night of 11 February, breaking 12 February 2007 in China here. I had this dream. I saw a master, but it's not the master, the American master I know. I saw this master. In the dream, I knew that this is a highly accomplished master, like a magician, wonderfully high. He had a sword in his hand. The master had a sword in his hand, and oh God, and he gave me a sword too. He gave me a sword, and then together, he and I were chasing the evil in the world. We're chasing the car. We're chasing all the evil. I remember it is in my dream book, 2007, 11 to 12 November, February. Yes, I saw this master, a highly accomplished master, not my present master. I said, but who is this? I don't know him. And then he had a sword in his hand, and he gave me another sword. And then together with him, we're chasing the evil in the world. So गुरु भाई बोल रहे हैं कि मैंने जब वो 2007 में एक स्वप्न देखे थे। स्वप्न में एक तलवार पकड़े हुए एक बड़े दिव्य गुरु को देखे हैं। तो गुरुदेव से वो उनको रिलेट कर रहे हैं, और साथ ही साथ मैंने गुरु भाई बता रहे हैं कि मैंने हम लोग गुरुदेव ही हम लोग को खोजते हैं। हम लोग गुरु के पास नहीं पहुंच पाएंगे। एक्चुअली गुरुदेव फाइंड्स अस। गुरुदेव gives us many references in our life and finally comes to our life. Yes. And you imagine that I had a dream in 2007, and I found Gurudev 15 years later. Oh God. Can you imagine that? Yes. But everything is predestined. Everything is predestined. And when
when I Yes. learned about the Kalki avatar, when I met Guru, I did not first know about the Kalki avatar. And then, hey, when I saw him, he had a sword in hand. I said, I met a master with a sword, and he gave me a sword. I said, but is this coincidence or what? And I had become interested in Gurudev immediately. And then I realized that, oh, this should be that master who made me in the dream. Yes. Yes. So he finds us before we find him. We don't find him, he finds us. Yes. Actually, when the right time comes, Gurudev comes in our life. That is. And Gurudev decides which is the right time. That is. Yes. Okay, it's nice being. गुरु भाई ये भाई प्रोफेशन क्या करते हैं ये चार्ल्स one गुरु of भाई our भाई guru, प्रोफेशन क्या है one of our Guru Bahan in this session wants to know what is your profession, what you are actually doing as a for in this world as a profession. Oh, as a profession, I am an English teacher. I'm an English You are an teacher. English teacher. Yeah, Oh, in very Chennai. nice. ओके Yes. Yes, I'm an English Okay. teacher. गुरु भाई कच्छ बाटी जी ने खड़ा किया था कच्छ बाटी जी ने हैंड रेज किया था अभी Oh, yes, yes. Kachcha Bhati. Kachcha Bhati Guru Bhai, please come. Kachcha Bhai, Guru Bhai जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? स्वागत है. जय गुरुदेव. Jai Gurudev, Mr. Charles also. Jai Gurudev to everybody. Just Charles Gurudev bhai, you have mentioned that you are writing that about that supreme divine mantras and this Gurudev sadhana. So, if possible, I request you, if possible, you can share after finishing that on this platform. So it will be very nice to we all will read and we get some courage from your one very back Gurudev had told that I alone and out in the and I will spread this sadhana in every corner of this world. So this through you things are the dreams. The Gurudev's dream is coming in the truth. Means Yes. you are some Congo and America, US are very you are very totally surrendered to the Gurudev's. We really very nice to listen to your this sadhana. Oh, That's all. Thank you. Jai Thank Gurudev. you. Yes, Jai Gurudev. Anything that I write, anything that I produce, I always pass through. I have a very good working relation with Vicky Sharma, and we first we discuss it, and then he will bring it forward. He makes it for publication. Yeah, because anything that we put together, you will see it. There's no problem. Yes, I do a lot of writing, and in fact, I think it's a Gurudev gift. A Gurudev gift to be able to see, to interpret some things. Yes. Yeah, correct. This one in his Gurudev's speech, once Gurudev also mentioned that in sadhana, when you're progressing, and then this writing also in part of this sadhana, it automatically happens with the Gurudev's people. Sidhha. That is also part of, we can see changes happen once we surrender to this sadhana and all this thing. So, right. Jai Gurudev, that's all. Thank you very much. Jai Gurudev. Kachcha Guru Bhai wants to ask you to share your writings. We are getting your. I am also getting in touch with you in WhatsApp. You share your writings. I will share those writings in groups also. Okay. Okay. But Vicky,
you can also translate into Hindi now. Yes, sir. Also translate Yes, yes. to Hindi. For Yes, those- definitely. Okay. Okay. Okay, today we are nearing to the end of this session. We will conclude this session and we will join in the next step also. For this, we will conclude this session. I would request Mr. हिंगू जी गुरु भाई से अनुरोध है कृपया मंच पर आए और सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को। बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार जय हो। गुरुदेव जय अवतार की जय हो जय हो जय हो जय हो जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। विकी जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।